Hello. पीडी डाउनलोड कर अभी स्टार्ट मत करो। You guys have another classes after this?
अच्छा, make sure that you are writing all the keywords. ठीक है, PDF will be provided to you. उसमें YouTube के नीचे लिंक होता है and you'll have like access of PDFs also. यहाँ से जो भी keywords होगा you have to write it. ठीक है, चलो now let's move to our first headline. Okay, homemakers are nation builders. Their work worth at least 30,000 a month. This is said by Supreme Court. ठीक है, अब imagine करो हम लोग बात करें एक family की. ठीक है, now every morning what happens, before like everyone wakes up, यहाँ पे ना एक इंसान है जो पहले से उठा होता है, right? And she prepares breakfast also. वो lunch pack करती है, right? घर को clean करती है. उसके बाद में she takes care of like children, है ना? उसके बाद में जितने भी elderly parents are there, उनको look after करती है. She manages like each and expenses that you can think of. Now यहाँ पे उन्हें हर एक छोटी छोटी डिटेल्स जो है याद रहती है, right? She handles emergencies also, right? She's the first person to wake up and often the last person to sleep, है ना? हम basically बात कर रहे हैं, इमेजिन करो कि ये सारे काम जो मैंने यहाँ पे गिनवाया उसमें से एक क्वेश्चन भी नहीं गिनवाया होगा मैंने अभी तक. अब जब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि उनकी मंथली सैलरी क्या है, सो द आंसर इज ऑलवेज 0. ठीक है, अब यहाँ पे ना कोई अपॉइंटमेंट लेटर है, ना ही कोई प्रमोशन है, ना ही कोई पेड लीव है, ना ही कोई पेंशन है, ना ही कोई वीकली ऑफ है यहाँ पर, राइट? ना कोई बोनस है. पूरी पूरी जो फैमिली है उन्हीं पर डिपेंडेंट रहती है ना. फॉर इयर्स द सोसाइटी कॉल दिस हाउस होल्ड वर्क्स. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली इस चीज पे ना एक क्वेश्चन पूछा कि अगर ये काम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो फिर उसके बाद में इस काम की वैल्यू क्यों नहीं है, राइट? Okay, this question led to one of the most important judgment आज के टाइम पे when we talk about women, social justice और unpaid care work है. अभी के टाइम पर basically this added more value to that question, to these things, right? अभी क्या changes आए हैं because of Supreme Court, because of this incident, that will be understanding. I told you before also, जब भी Supreme Court का नाम सुनो that news becomes important for you. अच्छा, exactly case क्या था? तो ये जो केस था बेसिकली एक रोड एक्सीडेंट से आता है हमारे पास में. A homemaker was there and basically she died and her husband and children they lost one important family member. ठीक है, लेकिन उसके बाद में जो पूरा का पूरा घर संभालता था वो फैमिली मेंबर दे लॉस्ट, राइट? और उसके बाद में जब कोर्ट ने उसका कंपनसेशन बेसिकली देखा, जब कोर्ट में कोई भी कंपनसेशन के लिए जाता है अंडर दिस मोटर व्हीकल एक्ट, राइट? तो उसमें हम लोग देखते हैं उसकी वैल्यू क्या है, किस बेसिस पर हमें बेसिकली कंपनसेशन देना है, राइट? तो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि वो तो कोई अर्न ही नहीं कर रही थी, उनके पास में कोई सैलरी नहीं थी, फैमिली को जो फाइनेंशियल लॉस था, राइट, दैट वाज लाइक वेरी स्मॉल, है ना? ऐसे कंसीडर किया जाएगा उसको इस एक्ट के अंडर में. तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बोला दैट दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. उन्हें जो है कंपनसेशन मिलना चाहिए, राइट? जो सिंपली वो कर रही थी, राइट? अगर हम लोग बोले कि पे चेक नहीं दे सकते फिर कुछ नहीं दे सकते हैं, उसको उस चीज में कंसीडर करने का मतलब है दैट वी आर लूजिंग वन इंपॉर्टेंट फैक्टर एंड एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए. होम मेकर के कॉन्ट्रीब्यूशन को भी रिकॉग्नाइज करना चाहिए. क्यों? क्योंकि वो भी एक रियल इकोनॉमिक वैल्यू जो है होल्ड करके रखती है और प्रॉपरली इसका रिकॉग्निशन मिलना ही मिलना चाहिए. ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली इशू क्या चल रहा है हमारे यहाँ पे. अब हम लोग बेसिकली बात कर रहे हैं यहाँ पे क्या इशू है. बहुत टाइम से दिस इशू इज देयर कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो 1 लाख रुपए कमाता है, राइट? एंड लाइक डाइस, तो उसे कंपनसेशन मिलेगा, इजी है कैलकुलेट करने के लिए, राइट? अगर मैं बात करूँ किसी होम मेकर की, नाउ इफ दैट शी डाइस तो हम लोग उसे कैलकुलेट कैसे करेंगे? हम लोग चाइल्ड केयर के साथ में कैलकुलेट करेंगे, कुकिंग क्लीनिंग के बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे, एल्डर केयर के बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, राइट? तो ट्रेडिशनली कोर्ट्स यूज दिस नेशनल इनकम. ठीक है, वो छोटा सा पोर्शन जो है नेशनल इनकम में यूज करके, राइट? क्योंकि हमारे पास में कोई सैलरी स्लिप तो है नहीं, तो उस चीज को यूज करके हम लोग जो है कंपनसेशन देते थे, राइट? एंड मैंने लीगल एक्सपर्ट्स फॉर देयर जो कि आर्ग्यू करते थे कि ये जो है अंडर वैल्यूड है. एक्चुअल कंट्रीब्यूशन जो है होम मेकर का दैट इज मोर देन व्हाट वी आर गिविंग टू देम. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज पर अग्री भी करा कि बिल्कुल सही बात है. अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन बनाई यहाँ पे कि होम मेकर्स आर नेशनल बिल्डर्स. ठीक है, दिस इज व्हाट ही सेड. अब देखो,
कोर्ट ने यहाँ पे बोला कि जो अगर हम बात करते हैं इस काम की जो हमारे घर पर होता है, ठीक है, जो फैमिली को बिल्ड करता है, फैमिली की जो चीजें बिल्ड करता है, तो इसीलिए होम मेकर्स जो है, यू नो, दे आर बिल्डिंग नेशन इटसेल्फ, राइट। अब इसीलिए उन्होंने बोला, एक पावरफुल स्टेटमेंट दी, द कोर्ट फर्दर बेसिकली यू नो सेड दिस, दैट दिस इज अ लॉस ऑफ डोमेस्टिक केयर, राइट। और उसके बाद में इसको सेपरेट हेड ऑफ कंपनसेशन ट्रीट किया जाए, ठीक है। अब आई मेंशन यू सेपरेट हेड ऑफ कंपनसेशन, ठीक है। This separate head of compensation is important for you people, ठीक है, सबसे important है, सेपरेट हेड ऑफ कंपनसेशन है, ठीक है, अंडर मोटर एक्सीडेंट क्लेम वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। अब सबसे बड़ा जो यू नो इंपॉर्टेंट जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट का आया है वो इसी के अंदर में आएगा, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले तो हेड ऑफ कंपनसेशन क्या होता है, क्या होता है हेड ऑफ कंपनसेशन? ओके, हाँ बच्चा, ओके, ठीक है, एनी आइडिया? यहाँ समझ में आया स्टोरी किसकी है, किस बारे में है? अंडरस्टूड? I don't understand very much. ओह ओके, गॉट इट, ठीक है, ओके, आई टेक केयर ऑफ दैट, रियली सॉरी। यस, क्या है हेड ऑफ कंपनसेशन? व्हाट्स हेड ऑफ कंपनसेशन? Okay, you can think of like compensation like different boxes, ठीक है। Suppose that someone dies, right? किसी की accident में अगर death हो जाती है, someone dies in an accident, so courts will award compensation, right? Under these different boxes, under what different boxes, you know, loss of income हुआ, right? And these medical expenses, right? Like we have funeral expenses, so under these expenses, courts gives compensation to those people, right? अब उसके बाद में the court basically, you know, added another box to this, loss of domestic care, ठीक है। So now we have another box that is loss of domestic care, under which these you know basically you know women will be getting compensation, okay. Now it means you know court will separately recognize the value of household and caregiving services to these people, right? Acha, now the figure is 30,000, ठीक है। यहाँ पे जो पूरा का पूरा figure है, the figure is 30,000 per month. Now what exactly we are talking about? So the court basically directly said it that the value will be decided compensation in a cases that is you know compensation value of 30,000, right, per month. मतलब ये कंसीडर की जाएगी विद द लॉस ऑफ लाइक डोमेस्टिक केयर सर्विसेज जो कि हम लोग प्रोवाइड कराते हैं बाय अ होम मेकर, ठीक है। अच्छा, क्यों किया गया है? अच्छा, पहले इसका बेसिक समझ लेते हैं एक बार। जजमेंट ईयर वी आर टॉकिंग अबाउट 2013, राइट। मंथली वैल्यू कितनी रिकॉग्नाइज की गई है? दैट इज 30,000 इज मंथली वैल्यू रिकॉग्नाइज्ड, राइट। एक्ट इन्वॉल्व्ड इन दिस मोटर व्हीकल एक्ट 1988 व्हिच विल बी रीडिंग फर्दर एक्जैक्टली यू नो व्हाट दिस होल्ड्स, क्यों बनाया गया था, व्हाई दिस वाज मेड, राइट। ईच एंड एवरीथिंग विल बी अंडरस्टैंडिंग। बेंच की बात करें तो हु इज बेसिकली यू नो हु वाज इन्वॉल्व्ड इन दिस बैच व्हाइल दिस डिसीजन वाज टेकन, you know Justice Sanjay Karol and Justice Ann Kotiswar Singh was involved in this while writing examples, ठीक है। जब भी तुम लोग examples लिखोगे तो you have to write you know benchmark that you know while holding these two people, these benchmark you know person, you know such decision was taken and the example should not exceed more than 2 lines, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पे जो की फ्रेज है, the key phrase is taken as homemakers are what? They are national builders. This is what Supreme Court told to us. Now here court is basically saying something you know much bigger than you know this compensation. We are not only understanding you know this motor act is there, no, we are understanding about the articles, we are understanding about the amendments, we are understanding how the formation is happening in government, right? अब basically ये बोल रहा है that economic value is not equal to salary, ठीक है। This is the biggest thing. Why? How? Economic value is not equal to salary. Imagine karo that the person is there, she's working you know in household and she's like working and doing each and everything that you know think of, right? She's washing clothes also, utensils also, making food also, right? So I'm talking about 4 to 5 persons job over here, right? Now what exactly this means, she's you know cooking daily, you know she's raising children as well, she's you know basically looking after those elderly parents also, right? If she's like stop doing all these tomorrow, right, what will happen? अब हमें जरूरत पड़ेगी you know एक cook की, एक nanny की, एक cleaner की, right? I'll require these things, these person, right? I'll require household manager. So all these services have what? सारी सर्विसेज की एक मॉनेटरी वैल्यू है या नहीं है, राइट? अब अगर मैं यू नो इन सारी चीजों की बात करूँ, if I'm talking about these all person together, तो मेरा कोड जो है सिंपली इसको रिकॉग्नाइज करता है लाइक वैल्यू ऑफ दीज ऑल पीपल टुगेदर, जो कि हम लोग कहाँ पे पुट कर रहे हैं? एक ही इंसान में पुट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है उन्होंने बोला कि सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज हमारे पास में है दैट इज अनपेड केयर वर्क. Now, if we talk about this unpaid care work, this means work done for family welfare without wages, mostly performed by women and invisible to
जीडीपी, ठीक है। हमारी इकोनॉमी इस चीज को रिकॉग्नाइज नहीं करती है, आवर इकोनॉमी डज नॉट रिकॉग्नाइज दिस, राइट। फॉर एग्जांपल दिस कुकिंग इज देयर, क्लीनिंग इज देयर, चिल्ड्रन इज देयर, एल्डर केयर इज देयर, राइट। And because of this most unpaid care, this worldwide, which is like performed by, women, this is, under recognized. इसीलिए जो है इकोनॉमिस्ट को लगता है कि हमारा जीडीपी है वो पूरा का पूरा प्रोडक्टिव वर्क नहीं कैलकुलेट करती है, राइट। सो जीडीपी डजंट, कैलकुलेट ऑल प्रोडक्टिव वर्क ऑल टुगेदर, ठीक है। Now, why constitution have to do this? What was the like requirement? The requirement was because of Article 14, ठीक है, which talks about equality, ठीक है। It means everyone's contribution deserves equal respect, right? After this, dignity. Article 21 says what about dignity, right? So because recognizing domestic labor upholds the dignity of the homemaker, you are not recognizing someone's efforts, right? She is doing, household chores from like morning to the night, right? हम उसे recognize नहीं कर रहे, so this goes against Article 21, right? After this, we have social justice. Social justice किसमें आएगा? हाँ? Okay, yes. Okay. अब यहाँ पे सबसे one of the most important goal of the constitution is what? Social justice, right? मतलब state को, institution को recognize करना, protect करके चलना है social justice, right? Each and everyone should be like treated equal, right? And in front of law, there should be no differences, right? Gender justice. अब correct historic under evaluation of women's household work is very very important. अब क्या हो रहा है कि इतने टाइम से हम लोग ने देखा है कि when it comes to household works, we consider it undervalued, right? So now we have to basically change this scenario, change the society, ठीक है। Now this is not the first time court ने इसके बारे में बोला है, this is not the first time that court spoke about this. Now what we are understanding, Supreme Court gave the directions on this like for years and years. इससे पहले भी हमारे पास में इंसिडेंट है, we have incident which happened इससे पहले भी, जैसे कि पहले मैं बात करूं, एक केस है, that is कीर्ति ओरिएंटल इंश्योरेंस कॉल लिमिटेड केस. नाउ व्हाट हैपेंड हियर, सुप्रीम कोर्ट है रिकॉग्नाइज कि होममेकर जो है बहुत वैल्यूएबल जो है वर्क करती हैं, कंट्रीब्यूशन करती हैं, एंड दे कैन नॉट बी इग्नोर्ड, एंड वी शुड पुट देम अंडर दिस कैलकुलेशन इम्पोजिशंस, राइट। नाउ आफ्टर दिस हमारे पास में आता है मोटर व्हीकल एक्ट 1988. एनीवन हु इज अवेयर ऑफ इट? किसको पता है इसके बारे में? एनी आइडिया व्हाट दिस एक्ट इज? एनीथिंग? Basics so I have like given you. Dependent leave, temporary, paralyzed or accident of the home, permanently disabled हो गया या फिर temporary disabled, we lost in life on that basis, the government will give. इसके अलावा कंपनसेशन के अलावा और क्या काम करता है? गुड. अब ये मोटर व्हीकल एक्ट 1988, दिस इज द मेन रूल जो कि पूरा रोड ट्रांसपोर्ट को रेगुलेट करता है. इट रेगुलेट्स ईच एंड एवरीथिंग दैट हैपेंस विद रोड ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, राइट. तुम्हारे लाइसेंस से लेके कंपनसेशन तक ईच एंड एवरीथिंग इज अंडर दिस एक्ट ओनली, ठीक है. ड्राइविंग लाइसेंस हुआ, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हुआ, तुम्हारा रोड सेफ्टी रूल्स हुआ, इंश्योरेंस व्हीकल्स हुआ, ट्रैफिक वायलेशंस हुआ, कंपनसेशन हुआ, ईच एंड एवरीथिंग विल कम अंडर दिस एक्ट ओनली, ठीक है. नाउ व्हाट इज MACT, मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल? वर्ड ही तो बता रहा है सब कुछ. ओके, MACT की अगर मैं बात करूं तो दिस इज अ स्पेशल ट्राइब्यूनल जो बेसिकली डिसाइड करता है, वो डिसाइड्स कंपनसेशन क्लेम्स व्हिच अराइज फ्रॉम द रोड एक्सीडेंट्स, राइट. सो एग्जैक्टली कीप क्रिएट योर, इमेजिन करो एवरी एक्सीडेंट दैट इज गोइंग टू like regular courts. Each and every accident is like going to these regular courts. Just 3 days back or 4 days back, we read our news that our like courts are filled with unnecessary basically cases, है ना. There's so much of burden. We have like we have like vacancies for so lawyers, but then again they are not filled, है ना. We have like read so many things about it. Now imagine करो that each and every case is going basically going to court, right. जो भी accident हो रहा है हम लोग कोर्ट की तरफ भाग रहे हैं. Now what will happen? Pile of case like will happen. Resources का वापस खत्म होना शुरू हो जाएगा. उसके बाद में vacancies हमें increase करनी पड़ेगी, and they're like so and so, right. Each and every chain will like continue forever. अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, इसीलिए हमने create किया, MACT create किया. MACT was created. Why this was created? So that justice can be given faster, right. And after that we can have like specialized handling rules for accident claims. और उसके बाद में we can determine this compensation for each and every accident, that why it happened, how much loss we had, in which category we'll be giving it, right. So all of these is given under what? Under this MACT, ठीक है. Understood? अब उसके बाद में this is the concern of care economy also. Care economy कैसे? ये जो
compensation दे रहा है हम्म household company ये motor vehicles अगर मतलब only accidents road accidents हुआ तभी या मतलब कोई disease में नहीं नहीं, सिर्फ रोड एक्सीडेंट्स में, ओनली रोड एक्सीडेंट्स, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, केयर इकोनॉमी क्या होता है? बेटा यू आर आस्किंग फॉर लाइक दिस एमएसीटी और फॉर विच यू आर आस्किंग लाइक इन जनरल जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है? नहीं, जनरल हाउस होल्ड के लिए 30,000 वी हैव लाइक केप्ट सेपरेट, ठीक है, तो मतलब हर चीज में देना पड़ेगा, ठीक है। सो इट मींस वी आर रिकॉग्नाइजिंग द वैल्यू ऑफ दीस हाउस होल्ड वर्कर्स, ठीक है। और जो motor vehicles We are like introducing this, understanding this because from this incident this scenario came in. तो क्योंकि ना किसी का एक्सीडेंट हुआ था और फिर उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज को बेसिकली रिफॉर्म किया, तो हम लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, व्हाट इज केयर इकोनॉमी? कुछ तो दिमाग में आ रहा होगा, इतना वर्ड नॉर्मल से सिंपल सा है। हम लोग जब भी इकोनॉमी की बात करते हैं तो इकोनॉमी डज नॉट रन ओनली ऑन फैक्ट्रीज, है ना, ये तो पता है ना हमको, बेसिक सी चीज है कि हम लोग सिर्फ ऑफिसेज और सिर्फ बिजनेसेस पे नहीं रन करते हैं, राइट। इट इज आल्सो रनिंग ऑन पीपल, राइट। सो पीपल हु आर लाइक रेजिंग चिल्ड्रन, पीपल लाइक हु आर केयरिंग फॉर एल्डर पीपल, है ना। सो इकोनॉमी उनके बेसिस पर भी चलते हैं, राइट। सो दिस इज नोन एज केयर इकोनॉमी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को रिकॉग्नाइज किया, राइट, वैल्यू ऑफ दिस होममेकर, एंड उन्होंने बोला कि इसको भी बेसिकली पार्ट ऑफ केयर इकोनॉमी बनाया जाए, राइट। केयर इकोनॉमी को भी बेसिकली पार्ट बनाया जाए व्हेन वी टॉक अबाउट जीडीपी, व्हेन वी टॉक अबाउट इकोनॉमी, ठीक है। Now, there is one more word that you have to understand, that is substantive equality. Any idea? Formal equality क्या होता है? मतलब we have to treat each and everyone equal, ठीक है, simple. Substantive equality क्या होगा फिर? It means मैं recognize कर रही हूँ these different realities, right? I'm recognizing different realities, right? And I'm ensuring a real fairness according to that, right? It means उस equality के अंदर में I have like divisions and subdivisions on the basis of requirement, right? On the basis of things that I require, ठीक है। मतलब somewhere this is a difference between equality and equity, ठीक है। अब the court is recognizing कि home का contribution जो है, homemaker का contribution जो है, it is different but it is significant also, right? So this is an example of substantive equality. समझ में आया? Understood? So from this what did we understand? We understood कि अगर मैं country की economy की बात करूँ, this is not only built on in offices, right? This is not built in factories only. हम लोग basically बात करते हैं household importance की भी, and that's what Supreme Court recognized, and they felt the importance of it, and for that they introduced another box which is introduced on the formation of these 30,000 compensation. ठीक है? Understood? Got it? चलो. Okay. Will remove AFSPA from Northeast bearing 1 or 2 states next year. That's said by Amit Shah. Acha. When we talk about protection, okay. So what's the limitation of protection? You went to center party. You told them that I'm like ready to give my freedom to you. Not killing is also a freedom, right? Not harming someone is also a freedom. Not stealing someone is also a freedom. And I'm ready to give that freedom to you. I told to citizens, basically that central party, that I'm ready to give this freedom to you. But in return, I want protection. I want land. I want resources. I want basically administrative. This way, each and everything can like learn smoothly, right? So in return of this, I got that from there, right? अब उसके बाद में, on name of protection, right? They basically made very harsh rules, some rigid rules. Okay. So what's the limitation of this protection according to you? What if they started putting us in pressure, made so many harsh rules, so rigid rules on name of protection? Okay. What about then? Like what's the limit of this protection? Is there any limitation or not? Okay, so it means there should be balance between protection and freedom. Okay, perfect. Or kuch? Anything else? Arad, anything? Okay, let's move to news.
Okay. Imagine that you are living in a village in Northeast India, okay? And this place is a beautiful place, right? Green mountains are there, and we are talking about valleys, we are talking about thick forests, right? Flowing rivers are there, and rich tribal culture, very important, okay? Hundred of communities are there, which are like living there with different languages, like. But for many decades, something very important is happening there. Life is not peaceful, okay? Some region is facing, so many situations, like, insurgency is happening there, armed forces are also there, extortion is also happening, cross border movement of militants, this is also happening, attacks are also happening on civilians, security forces also there is like demand for separate states and separate independence. So it means we have these kind of scenarios as well. There is beauty and there is conflict also, okay? We have this important village. अब यही जो situation है now, government felt कि अगर मेरे पास में कोई normal ruling होगी, that will not work over here, है ना? मेरे पास में government felt that normal policing will not help. Now I want some strict regulation, I want some strict enforcement over here, ठीक है? तो इसीलिए पार्लियामेंट ने पास करा a law that is named as AFSPA, right? Armed Forces Special Power Act 1958 में इसको पास किया गया, ठीक है? Okay. Why people are like unhappy with this? Any idea? If I'm like talking about instability, and for this instability we pass this through. So what's wrong with this? Okay, good, very good. Anything else? So for decades this law is in the news and the most debated laws in India. Okay? Why? Because let's understand this first, that why this AFSPA was created. Okay, so this was created because suppose there is a region who is like facing so many situations, right? Armed insurgency wali situation, right? We have like security forces ambushed also, illegal weapons are also basically passed on from there. Uske baad mein government is feeling that ordinary policy will not help us. Okay, we need some special force for this, and so they like pass this AFSPA. Now idea was very simple कि हमें जो है basically highly distributed area पर जो है basically जहाँ पे भी insurgency हो रही है वहाँ पे जो है military को spread करना है, simple as that. I want to spread this military wherever this insurgency is happening. Now when we talk about disturbed area, what is disturbed area? Disturbed area वहीं पर है जहाँ पे हमारे rules and regulations follow नहीं होते. Public area जो होता है हमारे it start like breaking down, right? When we our people or we have like a community who ask for separate state and independence, right? Now उसके बाद में supporters are following this AFSPA a sheet. Why? Because so much of chaos was happening in the society, right? So AFSPA was enough to manage all of that chaos, right? They had proper equipments also, proper military also, proper management also, proper rules and regulations also. So for that reason, supporters said that this is required, right? We need to preserve our national security, we need to protect our civilians, and this act is against these armed militants which is happening over there, right? अब यहाँ पर उनके उसके हिसाब से जो है AFS के बिना हमारे पास में कहीं ना कहीं जो है कॉन्फ्लिक्ट दोबारा से अराइज हो जाएगा. Once we remove this AFSPA, right, the chaos will come back. This is what supporters are saying. Now they're like critics also. Now they're opposing it. What they are saying that this is extraordinary power we are talking about. And whenever I'm mentioning extraordinary power, it means superior power. It means my human values, human rights are going to suppress, right? It means I'm going to reduce accountability. Human rights violation will be there, right? Excessive use of force will be there. So for that reason, critics are basically not happy with this AFSPA. Now, Amit Shah ने statement क्या दिया है? Now Amit Shah is saying that he's not basically saying that AFSPA is not required. He's not saying that it was wrong. वो बस अब ये बोल रहे हैं that security situation has like improved at that position. Now we can see the stability. So this is why we are going to remove this AFSPA, right? Exactly वही बोल रहे हैं कि basically this was like the emergency medicine that was given to you when you was ill. Now you are not, so you do not require it. जब तुम बीमार होते हो, when you are like ill, only then you take medicines, right? After that you do not require it, so you will stop taking it. So the same reason is this removal of AFSPA is कि हमारा requirement नहीं है, so we are going to take it back. ठीक है? अच्छा. Now there is one more thing. He says that 80% of Northeast already free from AFSPA. Okay. Now what exactly this is? So it means that earlier we had a situation where large areas were there जो कि consider किए जाते थे disturbed. यहाँ पर exactly वो क्या बोल रहे हैं? It means हमारे पास में AFSPA का अगर मैं बोलूँ एक बहुत ज़्यादा पोर्शन था उस एरिया पर जहाँ पर हमारे पास में disturbances हो रहे थे, where we had large number of disturbances. But now most of those areas are peaceful and they are like peaceful enough to govern through these normal laws and policies.
we were, you know, introducing this AFSPA because normal policy and governance was not efficient over there. But now because stability is there, so normal ruling and policing are basically, you know, efficient. ठीक है, समझ में आ गया? So it means we do not have that much insurgency, less insurgency is there, we have less violence, and we have like better laws and orders, and we have like greater public confidence also. Okay, this is what Amit Shah's statement is somewhere basically telling to us. अब उसके बाद में there is one more thing that you have to understand, that is peace accord. So he also said that, you know, basically 12 peace accords also signed since 2019. Peace accord का क्या मतलब है? Peace accord का मतलब है कि, you know, एक agreement होता है between the government and basically that insurgent group, whoever is, you know, in rivalry group, ठीक है, who is basically in opposition, right? So उनके बीच में we are like signing this agreement to end that violence, right? So this group basically agreed that, you know, we'll be giving up weapon, we'll be, you know, basically joining these democratic, you know, process, and we'll follow the constitution, है ना? और government is going to provide them what? They are going to provide them rehabilitation, they are going to look after development and all the political basically, you know, enhancement, right, that are required to build any constitution. ठीक है, समझ में आ गया? अब उसके बाद में government also believe this कि अगर हमारे पास में development होगी, if we'll have development, right, if I'll have like schools, jobs, hospitals, right, so I can reduce the basically in this appeal of insurgency, right? So development is, you know, somewhere, you know, development and security, they can like go together according to the government, right? अब उससे पहले हम समझो कि ये जो insurgency है ये north east में हुई क्यों? Any idea why this happening over there? क्यों आई हमारे पास में? Why this insurgency happened in north east? Okay, good. One of the reason, good. और अच्छा, insurgency का मतलब क्या है? Basic idea. How much? हाँ? Okay. और कुछ particular particular community is there and they are not happy with, you know, how government is ruling, ठीक है, उनके कुछ rights हैं, उसे सुन नहीं रही है, so for that reason it happens, ठीक है. अच्छा, अगर हम लोग सोचे कि ऐसा क्यों हो रहा है, so this is happening क्योंकि, you know, अगर तुम मैप को देखोगे ना तो you'll find one important thing कि जो नॉर्थ ईस्ट है ना वो हमारा connected है with like rest of India, ठीक है, and by, you know, very narrow strip it is connected, right? जो कि हम बेसिकली बात करें this, you know, one सिलगुड़ी कॉरिडोर की, right? अब यहाँ से जब हमारे पास में कनेक्शन है तो it becomes, you know, very very important for us, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? चिकन स्नैक, ठीक है, लास्ट क्लास में पढ़ा था, राइट? अब इमेजिन करो दैट योर हाउस इज लाइक कनेक्टेड टू द सिटी बाय ओनली वन दिस टाइनी रोड, तो फिर उसके बाद में क्या होगा? तुम्हें ऐसा लग रहा है कि, यू नो, मुझे तो, यू नो, कट ऑफ कर दिया इन्होंने, यू विल फील दैट, यू नो, दे आर लाइक कटिंग माई सेल्फ, लाइक. अब उसके बाद में जो हमारे पास में गैप क्रिएट हो जाता है, दिस क्रिएट्स, यू नो, समवेयर हेट्रेड, राइट? ऐसा लगता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी चीजें नहीं सुन रही है ना? तो यही सिनेरियो जो सिचुएशन है अभी हो रही है, ये जो डिस्टेंस है वो क्रिएट करता है क्या? फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करता है, राइट? एंड देयर इज लाइक अनदर रीजन आल्सो, एथनिक डाइवर्सिटी इज अनदर रीजन ओवर देयर. So Northeast is like home to many tribes, and whenever I'm mentioning tribes, I'm mentioning basically conflict with government and between these communities, right? Because we are talking about basically, you know, forest, है ना? और जब भी forest का नाम आएगा government के साथ में, we are like linking it with development, right? So ये जो हमेशा जो है misbalance जो है हमेशा चलता रहता है ना? So this is like another reason. उसके बाद में border challenge भी. अब North East जो है ना शेयर करता है international borders. North East shares international borders with what? वो चाइना के साथ में, बांग्लादेश के साथ में, right? And after like Bhutan also, right? So this is why this becomes very very important for us. So for security challenge reasons, this position becomes important for us. If we have like conflicts over there, if citizens are unhappy over there, so it means what? That we are somewhere, you know, opening gates for those terrorists, for those people, right? As अगर मैं बात करूं, you know, more difficulties की, तो हमारे पास में इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट का भी सिनेरियो यहाँ पर है. डेवलपमेंट इज नॉट हैपनिंग दैट मच ओवर देयर, राइट? सम पीपल बेसिकली सम प्लेसेस आर देयर जहाँ पे हमारे पास में, यू नो, स्कूल्स इतने अच्छे नहीं है, हॉस्पिटल्स अच्छे नहीं है, राइट? रोड्स अच्छे नहीं है. सो दिस इज व्हाई पीपल फील नेग्लेक्टेड. People feel that, you know, government is somewhere leaving them behind, ठीक है? And this creates hatred and frustration, and this is why they protest against government, ठीक है? So now AFSPA के पास में ऐसी क्या powers थी? What does this like AFSPA had like powers that, you know, we are like moving with like removal of this power. The reason is, first one is they had power to arrest without any warrant,
ठीक है, वो अरेस्ट कर लेते थे बिना किसी स्पेसिफाइड सर्कमस्टेंसेस के, जब उनका मन करेगा वो अरेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सर्च प्रेमिसेस आल्सो, दे कैन सर्च विदाउट एनी लीगल नोटिस, जब उनका ऑर्डिनरी वारंट्स की भी रिक्वायरमेंट्स होती है, बिना उसके वारंट के वो क्या कर सकती थी, सर्च कर सकती थी, राइट। उसके बाद में फोर्स यूज करती थी, मतलब लीथल फोर्स यूज करती थी अगर कोई भी सर्कमस्टेंसेस हमारे वहां पे अराइज हो रहा है तो, राइट। एंड आफ्टर दिस यहाँ पे जो था किसी भी चीज को लेकर, राइट, ईच एंड एवरीथिंग वाज कंसीडर्ड वायलेंस ओवर देयर, एंड वेरी ह्यूमन नेचर आल्सो, जब भी कोई वायलेंस लार्ज नंबर पर हो रहा होता है, कोई छोटी सी कम्युनिटी गैदरिंग भी होती है, तो हम लोग उसको कंसीडर कर लेते हैं समथिंग बिग इज हैपनिंग ओवर देयर। तो कुछ कुछ इंसिडेंट्स हमारे पास में वहां हुए हैं वेयर वी कंसीडर दैट सम वायलेंस माइट टेक, और आर्म फोर्स ने उस तरीके से रिएक्ट किया है व्हिच डिड नॉट टर्न आउट टू बी गुड फॉर दीज फोर्सेस, ठीक है। अब उसके बाद में वाई गवर्नमेंट फील की AFSPA वाज लाइक नेसेसरी, गवर्नमेंट को इसलिए लगा कि नेसेसरी है क्योंकि वहां पर जो है ऑपरेशन की फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती थी अच्छे से, राइट। उसके साथ साथ में रिस्पॉन्स जो है मुझे फास्ट मिल सकता है, इफ एनी कॉन्फ्लिक्ट इज हैपनिंग ओवर देयर, सो रिस्पॉन्स कैन लाइक हैपन फास्टर, काउंटर इंसर्जेंसी कैपेबिलिटी वाज आल्सो लाइक हैपन ओवर देयर, ठीक है। इसीलिए AFSPA को सपोर्ट किया गया, बट देन अगेन इट इज कंट्रोवर्शियल। व्हाई दिस इज कंट्रोवर्शियल? बिकॉज रूल्स आर वेरी हार्श एंड रिजिड, राइट। अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो वहां पे अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा, कैसे लेगा, दैट इज आल्सो नॉट मेंशन्ड प्रॉपर्ली। उसके बाद में रॉन्गफुल अरेस्ट वाज आल्सो डन, वारंट्स हमें नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। सो फॉर दिस रीजन दिस AFSPA इज बेसिकली क्रिटिसाइज्ड, ठीक है, अंडरस्टूड। अच्छा, जब भी हम लोग AFSPA का नाम लेगा, whenever we are going to take name of AFSPA, so we have to understand the name that is Iron Sharmila, right? So she is the lady जिन्होंने protest की थी, she is known as Iron Lady of Manipur. So she protested, after like 2000 Melham incident, she began a hunger strike, ठीक है, और उन्होंने डिमांड करा कि आप जो है AFSPA को रिपील करें, राइट। उनकी जो प्रोटेस्ट थी 16 years तक कंटिन्यू रही थी। दिस इज वन ऑफ द लॉन्गर हंगर स्ट्राइक्स इन द वर्ल्ड दैट इज नोन एज, ठीक है, आयरन लेडी ऑफ मणिपुर, अंडरस्टूड है। अच्छा, इसके साथ में ना देयर इज वन मोर थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब अगर ये वाली बात उठी है, ओके, अब हम लोग बेसिकली बात करेंगे जस्टिस जीवन रेड्डी कमेटी 2005, ठीक है। सो इट वाज फॉर्म्ड टू रिव्यू AFSPA, ठीक है। अब हुआ ये कि रिकमेंडेशन दी गई कि आप जो है रिपील करिए AFSPA को। सो द कमिटी आर्ग्यूड दैट द लॉ दैट हैड बीन लाइक गिवन to these AFSP, they are symbol of oppression for many people. You are just controlling, although the recommendation was not fully implemented, but it was given to them, ठीक है। अब exactly change क्या हुआ? So according to the government, जो हमारा security situation है वो थोड़ा implement, थोड़ा धीरे ठीक होना शुरू हुआ है। होम मिनिस्टर की अगर मैं बात करूँ तो around 80% decline of like violence is over there. So this is why we are going to remove this AFSPA 80% from that region, ठीक है। अब उसके बाद में ये पीस आया कैसे नॉर्थ ईस्ट में? एनी आइडिया क्या किया होगा गवर्नमेंट ने? आई एम आस्किंग यू दिस बिकॉज UPSC ऑफन आस्क कि अगर कोई हमारे पास में वायलेंस हो जाता है, कोई कंफ्लिक्ट हो जाता है, मोस्टली इन केस स्टडीज, सो व्हाट आर द क्राइटेरियाज एंड व्हाट आर द सिचुएशन दैट यू कैन टेक इफ यू आर इन सर्टेन पोजीशन। सो फॉर दैट रीजन जो भी मैं भी कीवर्ड्स मेंशन करूंगी, दैट यू हैव टू राइट डायरेक्टली इन पॉइंटर्स इन द केस स्टडीज, ठीक है। हाँ, क्या क्या होगा गवर्नमेंट ने, कौन सी अप्रोच ली होगी? ओके, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और सिक्योरिटी फोर्सेस भेजती है, और वेरी गुड, वेरी गुड, और वायलेंस को कंट्रोल किया, ठीक है। जो हमारे इंसर्जेंट्स थे, वी स्टार्टेड बेसिकली लिसनिंग टू देम, राइट। एंड ऐसा नहीं है कि सिस्टर वी स्टार्टेड लाइक लिसनिंग, वी लाइक फॉट अगेंस्ट देम आल्सो, ठीक है। उसके बाद में धीरे धीरे गवर्नमेंट ने रियलाइज करा दैट यू कैन नॉट क्रिएट लास्टिंग पीस ओनली विद गन्स, राइट। सो इट मींस वी हैव टू लिसन टू दीस पीपल, वी नीड टू टॉक, वी नीड टू डेवलप, वी नीड टू ट्रस्ट, राइट। एंड दिस इज द स्ट्रेटजी दैट गवर्नमेंट यूज्ड। डू यू वांट टू से समथिंग? Okay, ठीक है। So there was this new approach that emerged that was basically dialogue, development and security, ठीक है। अब उसके बाद में why these agreements are important? Imagine करो that if a young person is there and that person joins the insurgent group and later that person wants to return to a normal life. Now what should happen? Should they like fight forever? Should they fight forever? नहीं ना। या फिर अगर मैं बात करूँ उन्हें दोबारा से चांस देना चाहिए,
चांस देना चाहिए, राइट। तो यही सिचुएशन यहाँ पर आई कि अगर हम लोग पीस की बात करते हैं, ठीक है, तो हमेशा जो है गवर्नमेंट बिलीव करते हैं दैट वी शुड गिव दोस कम्युनिटी, दोस पीपल सेकंड चांस, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे जो है एक प्रोसेस पास हुआ दैट इज नोन एज रिहैबिलिटेशन, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो फॉर्मर मिलिटेंट्स होते हैं उनको क्या करते हैं, वी लाइक गिव देम नॉर्मल सोसाइटी दैट दे कैन रिटर्न टू, राइट। So whenever they are like settled, whenever they are like given that chance, so we give them roads, we give them development, we give them security, so that they can return back to the constitution, ठीक है। हम लोग इसे क्या बोलते हैं, रिहैबिलिटेशन बोलते हैं, राइट। सो उसके बाद में पॉलिटिकल सेटलमेंट कैसे होती है, पॉलिटिकल सेटलमेंट ऐसे होती है कि हम लोग जो है प्रोटेक्शन देंगे ट्राइबल कम्युनिटीज को, ट्राइबल सोसाइटीज को, राइट। एक लोकल सेल्फ गवर्नेंस को हम लोग बेसिकली रखेंगे, राइट। उसके साथ साथ में गवर्नमेंट जो है ट्राई करती है कि हर एक जो चीज है, हर एक जो कंसर्न है, ईच एंड एवरी कंसर्न शुड बी बेसिकली अंडरस्टूड एंड बेसिकली कैंसल थ्रू नेगोशिएशन ओनली। We use less violence, less war, less fight and less guns, ठीक है। This is what government moves up with. Why development is important? Because the fight was over basically based on this only. If you look at any community, any tribal communities fight, you'll focus on that. There is anger, there is this frustration. Naxal se leke tum kahin tak bhi uthaoge, you'll find anger over this reason only, that there is a gap between your central government and this portion of the society, ठीक है। अब there is one more thing that you have to understand. A new oil agreement is passed, that is Assam Nagaland oil agreement. ये जो है हमारे पास में पास हुआ है. This is another basically example that we can say whenever government want to solve any dispute through cooperation. अब यहाँ पे क्या हुआ कि बहुत टाइम से parts of like border between Assam Nagaland ये dispute में चल रहे हैं, है ना. These were like disputed for like many over years. अब इसी dispute की वजह से जो oil exploitation था वो हमारा रुक चुका था. Right, गैस का जो प्रोजेक्ट हमारा जो था, right, that was also stopped. Investment were also delayed. So nobody wanted to invest in such a place जहाँ पे ओनरशिप जो है डिस्प्यूट में चल रही है. It's very obvious, है ना. क्यों ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम रहेगी, एक्नॉलेजमेंट कोई लेगा नहीं, अथॉरिटी कोई है नहीं, right? For that reason what will happen, कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगी तो फिर हमारे पास कोई एग्रीमेंट भी नहीं होगा, right? Now what changed? The center Assam और Nagaland, they basically sign an agreement together. ठीक है. So message was very simple. Instead of fighting over the land, हम लोग basically काम क्या करेंगे? We are going to basically work together and we are going to use resources together, right? So this is known as cooperative federalism. ठीक है. Instead of fighting with each other over ideological conflict or over any dispute, we are moving towards development and development will lead towards more development, right? और इसको हम लोग बोलते हैं क्या? Cooperative फेडरलिज्म. ठीक है. कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब सिंपल सा इतना होता है दैट इंडिया हैज लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके पास में स्टेट गवर्नमेंट भी है और उसके बाद में कभी-कभी वो डिसएग्री करते हैं, नो डाउट इन दैट, राइट. स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दे डू नॉट एग्री विद ईच अदर, बट व्हेनेवर दे वांट टू कोऑपरेट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, राइट, वो हमेशा करते हैं सॉल्व उसको. और इस सॉल्व को बेसिकली इस कोऑपरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. ठीक है. अंडरस्टूड है. ठीक है. नॉर्थ ईस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? नॉर्थ ईस्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट बॉर्डर्स विद चाइना, विद म्यांमार एंड बांग्लादेश, राइट. एंड फॉर दैट रीजन आई रिक्वायर अबाउट, मुझे बेसिकली चाहिए नेशनल सिक्योरिटी. ठीक है. उसके साथ साथ में इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑल्सो बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट नॉर्थ ईस्ट तो ये किसके साथ का ब्रिज होगा? लास्ट क्लास में बताया था, साउथ ईस्ट एशिया के साथ में. ठीक है. फॉर दैट रीजन आई नीड टू बेसिकली पास फ्रॉम हेयर, है ना. अब उसके बाद में कल्चरल इंपॉर्टेंस ऑल्सो. नॉर्थ ईस्ट की अगर मैं बात करूं तो 100 ऑफ ट्राइब्स आर आल्सो देयर, न्यूमरस लैंग्वेजेस आल्सो देयर, राइट. रिच बायोडाइवर्सिटी मेरे पास में, राइट. सो वी हैव लाइक यूनिक ट्रेडिशंस आल्सो. सो फॉर दैट रीजन आल्सो वी हैव टू टाई दीस लिंक्स. ठीक है. अंडरस्टूड है? गॉट इट? चलो. Okay, next is FCRA Bill, expanding state control over civil society. Okay, what is FCRA Bill? Any idea? कुछ भी सुना हो कहीं पर? नहीं. नहीं. Okay, imagine that there is village and many people are working together to help each other, right? So one group teaches poor children, right? Another is like running free health camp also. Another plant tree is also there who is like protecting their forest, right? अब उसके बाद में एक दूसरा मेरे पास में जो वुमेन्स की हेल्प करता है, एक दूसरा है जो किसी और सोसाइटी में किसी और चीज में हेल्प करता है, राइट. किसी डिसेबिलिटी वाले ग्रुप को प्रोटेक्ट करता है, राइट. कोई फार्मर्स के लिए नई टेक्नोलॉजी जो है जो वो भेजता है, राइट. सो दीस थिंग्स आर लाइक हैपनिंग. So each and everyone is like helping each other. They're like groups who are like other groups, right? So we are talking about so these are like ordinary citizens and they are basically building one society where we have like basically proper development, right? हम लोग basically बात कर रहे हैं एक फॉर्मेशन की जिसका नाम है सिविल सोसाइटी. ठीक है. अब इमेजिन करो कि किसी बहुत काइंड हार्टेड इंसान ने ना
who is like living in another country, that person wants to support these groups, and he does what, he basically sends money, ठीक है. अब जो विलेज का चीफ है, now he wants to know, वो बोलता है चलो ठीक है, helping is good, no doubt in that, but we must know from where this money is coming, ठीक है. We must know that where it will go, right, and we must know that, you know, if it will be used properly or not, ठीक है. So now most villagers agree to this, but then chief starts, you know, adding more and more rules to it, ठीक है, that, you know, how this is how we'll find out, this is how we'll do, this is, you know, how things you should be done, right. So there are like so many rules added to that procedure, right. अब उसके बाद में some villagers begin asking these questions कि are these rules actually protecting the village or they are making it difficult for civil society to function, exactly क्या हो रहा है, ठीक है. अब यही जो हमारी डिबेट है पूरी की पूरी इस डिस्कशन में, that will be understanding. FCRA क्या है? When we talk about FCRA, we are talking about Foreign Contribution Regulation Act, ठीक है. Now what exactly this is, imagine करो society have like 3 pillars. The pillar number 1 is there, we are talking about government. Pillar number 2 is there, that is market, मतलब businesses. Pillar 3 is there, we have like civil society. And when I'm mentioning civil societies, I'm mentioning basically about groups. NGOs की मैं बात कर रही हूँ, I'm talking about charitable trust, I'm talking about voluntary organizations, मेरे self help groups जो होंगे, right, मेरी जो human rights groups होंगे, each and everything which is, you know, going to make society better, each and every group is over there. Why civil society is important for you people? क्यों चाहिए? Why do you require civil society? Can we function without civil society? हाँ बच्चा, ऐसा कोई साइंटिफिक क्वेश्चन तो नहीं पूछा है. It questions the government. Okay, ठीक है. Okay, ठीक है. Okay, imagine वापस से एक रिमोट विलेज, ठीक है. अब गवर्नमेंट जो है यहाँ पे, जो गवर्नमेंट के स्कूल तो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन फिर उसमें टीचर्स नहीं है वहां पर, ठीक है. अब एनजीओ की अगर मैं बात करूँ तो एनजीओ आया, एनजीओ ने बोला कि यू नो वी आर गोइंग टू हेल्प चिल्ड्रन लर्न, ठीक है. अब वो क्या करते हैं, वो बेसिकली, अच्छा फ्लड का इमेजिन कर लो, ठीक है, अब फ्लड का सिनेरियो हो रहा है. अब इससे पहले कि गवर्नमेंट वहां पर पहुंच चुके एनजीओ, राइट, एवरीवन इज, यू नो, हेल्पिंग, वॉलंटियर्स वहां पर आ चुके हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं फूड और मेडिसिन को. इमेजिन करो, यू नो, एक वुमेन है जो कि, यू नो, कहीं ना कहीं डोमेस्टिक वायलेंस फेस कर रही है, तो सिविल सोसाइटी में क्या होगा कि, यू नो, विल हैव लाइक वन, यू नो, बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई आएगा और उसकी हेल्प करेगा. बिफोर, यू नो, पुलिस रीचेस, बिफोर, यू नो, एनी ऑर्गेनाइजेशन रीचेस, कोई यहाँ पर आता है, ये लोग यहाँ पर आते हैं, राइट, एंड दे बेसिकली गिव्स लीगल सपोर्ट, राइट. So civil society is what, basically एक bridge की तरह है between citizens and the state, right. अब this is very very important for you to understand that, you know, these organizations, civil society basically gives voice to people, right. They create awareness, they tells, you know, that how we should deliver welfare, right, how we should, you know, promote accountability also, who should be like responsible for all these chaos, right. Now one important thing when we talk about, you know, FCRA, this is, you know, Foreign Contribution Regulation Act. बेसिकली ये पूरा का पूरा जो फॉरेन फंडिंग है उसे बेसिकली, यू नो, रेगुलेट करता है, ठीक है. मतलब मेरा एनजीओ हुआ, एसोसिएशंस हुए, ट्रस्ट हुए, राइट, जितने भी, यू नो, अगर इंडिविजुअल्स की भी बात करूं, दैट इज आल्सो बेसिकली कमिंग इन दिस एफसीआरए. अच्छा, इंडिया को जरूरत क्यों पड़ी एफसीआरए की? व्हाई डज लाइक इंडिया रिक्वायर दिस एफसीआरए कांसेप्ट? Imagine that someone from like another country sends money to an organization inside this India. Now most of the time what will happen, you know, healthcare, you know, they like go for healthcare, education के लिए जाएंगे, environment के लिए जाएंगे, disaster के लिए जाएंगे. लेकिन गवर्नमेंट जो है एक और पॉसिबिलिटी के लिए, यू नो, डरी हुई है. वो पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर ये फॉरेन मनी जो मेरा यूज हो सकता है, क्या ये यूज हो सकता है इन्फ्लुएंस करने के लिए इलेक्शन, ठीक है, क्या ये यूज हो सकता है, यू नो, पब्लिक, यू नो, अगर मैं बोलूं कि पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करेगा, क्या ये यूज हो सकता है कि, यू नो, सेपरेटिज्म प्रमोट कर सकता है, नहीं कर सकता है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट आउटर मनी कमिंग इनटू आवर इंडिया, राइट. तो इट मींस दिस कैन, यू नो, क्रिएट डाइवर्सिफिकेशन आल्सो, इट कैन क्रिएट chaos also, and this is what government was worried about, ठीक है. अब उसके बाद में हुआ ये कि गवर्नमेंट जो है धीरे धीरे से उन्होंने रेगुलेट करना शुरू करा कि ये फॉरेन फंडिंग आ कहां से रही है, आ रही है तो जा कहां से रही है, और जा रही है तो इम्प्लीमेंट हो भी रही है, नहीं हो रही है, राइट. अब लेट्स अंडरस्टैंड दैट, यू नो, फ्रॉम वेयर दिस एफसीआरए केम एंड व्हाई वाज दिस इम्प्लीमेंटेड एंड व्हाट वाज लाइक गवर्नमेंट रिएक्शन टू इट, राइट. अब देखो, FCRA originally came in 1976. Now what happened here, जो हमारा पहला FCRA था वो इनेक्ट इस टाइम पर हुआ था, इमरजेंसी पीरियड में इनेक्ट हुआ था अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंदिरा गांधी, राइट. नाउ व्हाट हैपेंड, कंसर्न हमारा ये था कि जो फॉरेन पावर आ रही है वो फॉरेन पावर इन्फ्लुएंस नहीं करेगी इंडिया का पॉलिटिकल प्रोसेस, राइट. देयर, यू नो,
thinking was that this money that was coming to India, this should not influence India's political process. ठीक है, सिंपल. फिर उसके बाद आता है FCRA, that is 2010. Now this is the revised revision that we are talking about. Now what happens in here? The old law was replaced by Foreign Contribution Regulation Act 2010. Objective इसका सिंपल सा इतना था कि हम जो है कहीं ना कहीं रखेंगे ट्रांसपेरेंसी, राइट. हम लोग मॉनिटरिंग पे फोकस करेंगे और उसके बाद में वी आर गोइंग टू फोकस ऑन अकाउंटेबिलिटी, राइट. सो इट मींस वी आर गोइंग टू लुक आफ्टर कि जो हमारा आज का जो करंट प्रिंसिपल लॉ चल रहा है, दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस. नाउ आफ्टर दिस वी हैड FCRA amended. Now in this position we had what? Significantly tightened regulations on foreign funding. Now we amending this ruling. How much money we are getting, in which NGO it is getting, if it is getting from how it is implemented, right? अब इसमें क्या हुआ कि changes क्या है? तो सबसे पहले changes तो ये आया, suppose करो कि we have 2 NGOs over here, okay, A NGO and B NGO. Now what happens, that A NGO is there and that A NGO receives 10 lakh from your foreign donor. Now NGO A then sends this 5 lakh to this B. ठीक है, इस 5 लाख इसको बेच दिए, 10 लाख में से 5 लाख इस B को बेच दिए. Now NGO B is using that money for same project. ठीक है, अब उसके बाद में वो बेसिकली अलाउ किया जाता था पहले वाले टाइम पे, लेकिन इसके टाइम पर जब हमारा FCRA अमेंडेड किया गया 2020 में, तो इस वाले प्रोसीजर में चेंज किया गया. अब प्रोसीजर ये है दैट दिस A NGO कैन नॉट सेंड मनी टू दिस B NGO. ठीक है, दैट वाज स्टॉप्ड. ठीक है, अब इस चीज पे रोक कर दिया. क्यों कर रोका होगा? क्यों रोका? क्योंकि when we are sending one NGO to the another NGO to the another NGO, the basically tracking becomes difficult, right? That how much money we are getting, where it is used. So for that reason they stopped basically distribution of NGO money, right? अब इसके बाद में यहाँ पे एक और चीज बोली गई that now we want to basically include this system with Aadhaar also. ठीक है, now they said what? कि आइडेंटिफिकेशन रिक्वायरमेंट इज मैंडेटरी, दिस इज रिक्वायर्ड, राइट. यहाँ पे जो था पहले हमारे पास में इतना ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे क्या हुआ कि उनका आइडेंटिफिकेशन डिटेल इज मस्ट, राइट. गवर्नमेंट सेज दैट वी मस्ट नो दैट हु इज एक्चुअली मैनेजिंग दिस ऑर्गेनाइजेशन, राइट. अगर वो पैसा आता भी है तो हम अकाउंटेबल किसको मानेंगे, राइट. सो फॉर दैट रीजन आधार कार्ड इज मैंडेटरी. फिर उसके बाद में एडमिन एक्सपेंसेस वर कट, राइट. सो लिमिट रिड्यूस फ्रॉम 50 to 20%. एनजीओ कैन स्पेंड ओनली 20% ऑफ फंड्स ऑन दिस इंफ्रास्ट्रक्चर. अब यहाँ पे क्या बोला गया कि जो भी हमारा पैसा जो हमारा जाएगा, राइट, जो भी हमारा ट्रांसफर में या फिर उसके बाद में इम्प्लीमेंटेशन में, वो एक्सपेंसेस जो है हमारे ऑफिसेज में नहीं लगेंगे, राइट. क्योंकि अगर हम बात करें वी आर टॉकिंग अबाउट डेवलपमेंट, अगर तुम एक्सपेंसेस जो है अपने लिए लगाना शुरू कर दोगे, अपने एक्सपेंसेस के लिए लगाना शुरू कर दोगे, तो फिर उसके बाद सोसाइटी में एग्जैक्टली क्या दोगे, राइट. तो वो जो है कट करके कितना करा गया? सिर्फ 20%. पहले हमारा जो फॉरेन फंड्स होता था एडमिनिस्ट्रेशन पर वो होता था 50%, बट नाउ इट इज रिड्यूस टू 20%. ठीक है, अब उसके बाद में उन्होंने बोला कि फॉरेन डोनेशन को आप जो है आप प्राइमरली अपने लोगों को हेल्प करने के लिए यूज कीजिए, राइट. ऑफिस एक्सपेंसेस के लिए आप क्यों यूज कर रहे हो उस चीज के लिए, राइट. तो इसीलिए वहां पे जो था उसको मना कर दिया. अच्छा, एनजीओ ने इस चीज को ऑब्जेक्ट भी करा. क्यों ऑब्जेक्ट करा? उन्होंने बोला कि जब तक हम तुम गुड प्रोजेक्ट की बात करते हो, यू वांट गुड प्रोजेक्ट फ्रॉम अस. सिविल सोसाइटी के लिए यू नीड बेटर प्रोजेक्ट्स. गवर्नमेंट को भी चाहिए एनजीओ जो अच्छा काम करे. सो फॉर दैट रीजन वी रिक्वायर अच्छे वाले स्टाफ, वी नीड टेक्नोलॉजी, वी नीड अकाउंटेबिलिटी, वी नीड मैनेजमेंट, एंड फॉर दैट रीजन वी रिक्वायर मनी ऑल्सो. तो एक्सपेंडिचर उसको 20% कर देना इज रॉन्ग. ठीक है, अब इस चीज पे जो है बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल चीजें चली, बट देन अगेन इट वाज रिड्यूस टू 20% ओवर हियर. ठीक है, अब उसके बाद में मैंडेटरी एसबीआई अकाउंट वाज आल्सो इंट्रोड्यूस. अब यहाँ पे जो भी हमारा फॉरेन फंड आएगा दैट शुड बी ओनली रिसीव्ड ऑन स्पेसिफिक एसबी अकाउंट, राइट. उसके अलावा कहीं और रिसीव नहीं कर सकते हैं. गवर्नमेंट सेज दैट अगर हमारा फॉरेन फंड जो है एक ही चैनल के साथ में आएगा, ठीक है, तो इसीलिए मॉनिटरिंग करने में और ज्यादा इजी रहेगा. ठीक है, जैसे कि हम लोग एयरपोर्ट सिक्योरिटी की बात करें, तो अगर हम लोग किसी छोटे से गेट से कहीं ना कहीं चेक ना करके हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगर एक ही गेट से मेरे पास में सब लोग आ रहे हैं, ठीक है, एक बड़े से गेट से सब लोग आ रहे हैं, तो वी कैन हैव बेटर एक्सेस टू दैट इन्फॉर्मेशन, बेटर एक्सेस टू दैट लोकेशन ऑल्सो. सो इन द सेम वे हम लोगों ने क्या चूज करा? एसबीआई चूज करा. ठीक है, अंडरस्टूड है? एनी क्वेश्चन? ठीक है, सो विद दिस वी आर गोइंग टू एंड टुडेज न्यूज. थैंक यू.